शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तुभ्यं नमो नमः। विष्णुपत्नीं क्षमा देवीं माधवीं माधवप्रिया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तुभ्यं नमो नमः। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरि ओम। कुछ देर भगवान नाम से अपनी आत्मा को धोए, दिन भर की थकान मिटाए। जो दिन भर हफ्ता भर थक के आए, मैल इकट्ठा हुआ तो साबुन से नहाए, तेल लगाया, गद्दे तकिया पर आराम विश्राम किया। किंतु जो आत्मा की थकान हुई, जो आत्मा पर मैल चढ़ी, उसे कौन से साबुन से नहाए, कौन सा तेल आत्मा पर चढ़े, कौन सी तकिया पर आत्मा को सुलाए, ताकि न केवल शरीर को विश्राम हो, न केवल मन को विश्रांति हो, किंतु आत्मा को भी सुकून मिले। हीलिंग द सोल। R&R for the soul. तो शास्त्र में कहा अपनी सहज स्थिति में वापस आए, returning to the normal casual as is stage. सहज अवस्था, सहज स्थिति। साधो भाई सहज समाधि हुई। कोई उल्टा नहीं टंगना है, कोई प्राण नहीं धरना है, कोई व्रत उपवास नहीं करने। सहज अवस्था में विश्राम पाना सब के लिए संभव। सहज समाधि, सुखासन में बैठे, जैसे शरीर को स्वस्थ लगे वैसे बैठे, निश्चिंत नारायण में स्थिति हो। सब अपने ही हैं। यहाँ हमें कोई पहराव नहीं करना है, कोई दिखावे की आवश्यकता नहीं है।
जो सहज है वही सत्य है, जो सत्य है वही शिव है, मंगल है, कल्याणकारी, और जो शिव है वही सुंदर है। तो सत्य, शिव और सुंदर तीनों का संगम सहज अवस्था में प्राप्त है, और वो सहज अवस्था विनायास हम सभी को अभी इसी क्षण यही इसी जगह प्राप्त है। तो जो सत्य का सानिध्य प्राप्त करना हो, जो मन विचारों को पवित्र करना हो, वाणी को शुद्ध करना हो, मांगल्य का अनुभव करना हो और अपने सौंदर्य का अनुभव करना हो, तो मात्र अपनी सहज अवस्था में एक डुबकी लगाए, leaving aside all external pretense, shedding all the outside image, rid of all the dramas, going back to my natural state as is. I find myself sitting right next to the Lord Almighty. For the very word sahaj means that in Sanskrit janmavachak hai. Aja, ajanma hai, forever. The one who was never born and will never perish. The one who has ever been, Aja. Saha is with, together with. Saha Aja. I am with the unborn. और सानिध्य से, by association, लोहे का परिस स्पर्श हुआ तो स्वर्ण में रूपांतर हुआ। हाथ में कापुर कैंफर को होल्ड किया तो हाथ को भी कैंफर का सुवास लग गया। अपने रिस्ट पर फ्रेग्रेंस लगाया तो माय आर्म बिकम्स फ्रेग्रेंट। ऐसे ही जो आज के सह हुआ तो मुझे अपनी याद आई कि हाँ, मैं भी सहज हूँ। Not only am I ever in the presence of, in association with the unborn, the eternally manifest. In fact, I am that. The stupendous, momentous, celebratory moment arriving in my life. When the wave recognizes that all my lifetime I was preserving my form, caring for my name, only to recognize today that yes, I am the name and the form, but I am so much more than that. I am the water, I am the substance that carries, that holds this form and carries this name. The form shall perish, the name will be lost. I, in the form of the substance, in the form of the water, always was, am now, and ever be present still, one with the ocean. I am in all the waves, and all the waves are in me alone. If I associate with the water that I am, disassociating with the wave form that I misunderstood myself and limited myself in the form of this body bearing this name. The शिव का ज्ञान और अम्बा माँ की शक्ति दोनों का जहाँ मिलन हो, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर एकत्रित हो, शक्ति को ज्ञान का आधार मिले, ज्ञान को शक्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। Knowledge is power because of the power that is with the knowledge. No one
care for knowledge if it did not empower. Knowledge is significant because it empowers. Power without a purpose would be meaningless, dangerous, undesirable. So, हे शिव शंभो, हे शक्ति माता, हमें आपकी शरण में रखना है। हमें आपके ज्ञान की भी आवश्यकता है और माँ आप अपनी शक्ति भी दो। तो इस प्रकार शांत मना होकर देखते देखते इधर उधर की बातें बंद हो जाए और अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाए, भीतर की यात्रा शुरू हो जाए। Where the treasure trove exists, where the toughest climb yet resides, where the deepest ocean lives, where the most phenomenal views, the best of the best panoramas can be seen all at once. And the best part is effortlessly, no climb needed, no diving needed, no gear needed. In fact, I must get rid of all my gear, all my baggage, to view the best of the best. तो अपनी आत्मा को भगवान नाम से, ईश्वर के ज्ञान से पवित्र करे, धो डाले, शांत हो जाए, सुंदर हो जाए, सत्य में स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञा से। शिव की आराधना करे, मांगल्य पवित्र, the well-wisher of all, कैवल्यदाता। नवरात्रियां चल रही है। We are at the cusp, at the threshold between the Ashtami and the Navami. उसके पश्चात विजयादशमी आएगी। So conditioning our mind, calming down, giving ourselves a break away from the mind, settling down in my own self. साधक साधना द्वारा सिद्ध हो जाए। अपने साध्य की प्राप्ति हेतु जो साधना चल रही है, in my never stopping, ever running effort to fulfill the purpose of my life, to achieve my mission, which is my sadhya. इस साधना द्वारा सिद्ध होने के लिए सावधान हो जाओ। जय श्री कृष्ण, जय जगदम्बा माँ, जय शिव जी, जय नारायण भगवान, सभी की जय हो, जय जय। And I have to start with an apology. I'm sure most of you thought that आज तो break मिलेगा, यहाँ पे social gathering होगा. This was not part of the agenda. Certainly, as you can see, there is no Gita here. So this is not necessarily meant as a Gita reflection class. But I'm really grateful. I'm humbled. I'm grateful, and I really appreciate Kala and Parimal Bhai for giving the opportunity for inviting. This is the most cherished group. The Gainesville Viju gang, right? This is the best. And to be a part of it, and to be invited to it, and to create some space and some time for Bhagavad Charcha
is a phenomenal opportunity for me, and I hope that you do not feel like your time is wasted today. So what I'm thinking is, because we don't have the Gita does not mean the Gita does not exist. We will talk about the Navratri context in the context of Gita. Is there a connection between Navratri and the Gita? है ना, गीता में ऐसे directly Navratri addressed नहीं है, acknowledged नहीं है, and yet there is a very deep, very direct, very specific, very explicit, very real connection between the message of the Gita and Navratri ये जो है. And it so happens that Gainesville में हमारा 7वां अध्याय चल रहा है ना, ज्ञान विज्ञान योग, and this connection actually appears in the 7th chapter. And so the benefit of this might be those who come for the Gainesville session might get a break next time, not today, because we may have covered some of it this time in going through it. So I know we're short on time. By the way, what a wonderful museum this is. मैंने मैं कहा कि कला नाम बिल्कुल सिद्ध किया है ना, सचमुच में. And the fragrance of and the beauty of the sattvika and the talent and the gift. This is a gift from God, is it not? This is totally a gift from God. It has to be earned, and clearly it has been earned, and it's so apparent. I stopped in my track. जैसे ही नीचे आया तो अपने लड्डू गोपाल को सामने देख करके, oh my God, I was on my knees. Wow, it's the perfect place. So thank you again for the opportunity. Very cherished, very much appreciated. So we'll get right down to our business. There's only one business. How does the Gita? Is there a connection between the Gita and Navratri? And yes, there is. Is there a connection between the Gita and fill in the blanks, anything? And also, yes, there is. Guaranteed, right? 100%. There is, and the beauty of this, there is no conflict. There is a connection. There is no conflict. There is no controversy. In the scheme of the Gita, it is all aligned. Please come in. Jai Shri Krishna. Hare Om. So the beauty of the Gita is that it reaches where we are. No, there is no prerequisite required other than an open mind, essentially. It comes to, this is the one scripture, I might say, on the planet that actually comes wherever we are. It does not expect that you be a certain caste or creed or religion or color or age or gender or any of it. It does not expect that you would have any even background knowledge about anything, because it isn't a religious text, it's a spiritual text. It expects you to be human. It expects three things. Shankaracharya के शब्द में कहा जाए तो मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुषस्य संगम. Shankaracharya said, as long as there are these three things, these are his words, Adi Shankaracharya, so long as you're a manushya, and I think this is a collection of manushya, right? So long as we're humans, so long as there is mumukshatva in mukti ki ichha, looking for some resolution. Mukti matlab salvation ki bhi baat chodo, liberation ki bhi baat chodo. Actually, mumukshu does mean that, right? Liberation from this material life. But I might even suggest that as long as we're trying to resolve some conflict, as long as there are conflicts in our life, any kind of conflict, the Gita has a place, because it comes to the rescue. And I don't know that there will be anyone who can say that there is no conflict in mind. And those would be a sadhaka of Gita. As you gradually climb, the conflicts will start to resolve. The more you climb the summit of the Gita, the conflicts will start to resolve. And once you are on the peak, we were just talking to Dhavalbhai about Kilimanjaro and the sunrise, that once you're at the top, then you see the full perspective, right? The big deal about the peak is what? That is the point from where you get the full perspective as it actually is. When you're climbing, you only see maybe peripheral vision, maybe 180 degrees at best. But when you're at the pinpoint, that is when you see 360 degrees, right? All of it. And so it is with the Gita, that as you climb and as you reach the top, that you are actually able to see things the way they are, completely. And so as long as we are humans, that we recognize, this is not just a cliche, this is not, I'm not being sarcastic. My point is, as long as there is recognition that, wait a minute, I am different. I am not just my dog. I'm not a cat. I am not just this or that. I do have choice. The big deal is I can think and I can make informed decisions. I can make choices. And those have an effect. So the dog and the cat necessarily do not. If you lock them up and go to work, that's where they'll be stuck. So I have a choice every moment.
And therefore, there has got to be a way to resolve my conflicts. There's got to be a way for me to fulfill the mission, fulfill my purpose. One of the sessions I had said, be careful, like, you pay attention to the words fulfill. Like, fully filled would be fulfilled, not half filled. Fulfill the mission. And the way to tell whether it's fulfilled or not, that it should be overflowing. Whatever is fulfilled, if I open this and fill some more, because this is fulfilled, it'll start overflowing because it cannot hold anymore. You know? So when my life will be fulfilled, I will have no hatred, no fear, no anxiety, no misery, no negativity of any sort, and only filled with acceptance, inclusion, love, tolerance, forgiveness. So much so that if I cannot hold it anymore, that wherever I go, as an example, not I as in not me, talking about the sadhak of the Gita, that person only knows how to give because it can hold no more. If there is anything anymore come, it only spills over. That would be truly a fulfilled life. And that would be, I would suggest that is the claim, that's our claim, that's the purpose of our life. Until we have reached that, we're half filled, not fulfilled. And so mumuksha gets to that point that, hey, wait a minute, I want to get to that stage, not only the big house and the beautiful possessions, and sorry, भाई क्षमा करें अब यहाँ भी छुट्टी नहीं हुई भैया I know I have a point of no return. I saw you now. I'm so sorry. This is like I was asked to, therefore. So like I feel guilty of this because and he's omnipresent. You're omnipresent. So I'm embarrassed, like as if I'm taking over or something. Please, you can stop me. How about this? You can stop me at any time and say, this was enough today. We get it. Okay. So, mumukshatva would be that I want to get to a point, very quickly we're talking about Shankaracharya ji ka manushyatva, mumukshatva, mahapurusha sangam, that those are the only prerequisites for the sadhak of the Gita. And that Gita connects with Navratri also. These are very integrally connected, in fact. So if I want to get to a stage in life where not only do I have the big house and the possessions and the name and the fame and the degree and the association, all of that, these are all good. Like that sadhak of the Gita will never hate anything or anyone, would never shun, will never say, I want to run away, I want to get rid of my house, or I want to get sannyas. Sab aane do, right? Like Bhagavan Krishna, Dwarika, nothing bothers him. But there's got to be something higher, something independent, where I can get to a stage where I no longer depend on these things. These are good, but even without this, the internal state does not change. How I feel inside no longer depends on the external possessions. So there is the external and there is the internal. And so now we'll start getting towards the Navratri, right? Everyone has some possessions that are external to them and those that are internal to those. The internal ones are subtle, right? They're intangible. They cannot be touched, they cannot be seen, they cannot be heard, but they can be felt and they can be known. You know how you feel. Literally when we say the words, I know how I feel. I know what's in my mind. I know what I want to do. Well, you cannot see that knowledge, but I know it. You cannot feel it. Show, but right? So there is the internal treasure, but then there is the external manifestation also. How do I greet my guests, or how do I serve those who I care about, and all of that? And to what extent do I go? So everyone and everything has an external manifestation and an internal manifestation down to the atom, right? Those, again, high school chemistry, high school physics. If you remember, down to the atom, every atom even has an external orbit in which electrons would rotate, and inside would be the protons and the neutrons and all that, right? Now we've seen and we've learned through science that even those subatomic particles have an inside and an outside, right? And so going within, and they say that, well, there is only inside. Finally, the conclusion so far is that there's only some sort of a wave, some sort of a combination of energy and information. Energy and information is how it's been described. Energy, guess what, is Shakti. And information is, guess what, knowledge. है ना? हमारे शास्त्रों में, पुराणों में शिव शक्ति को जो कहा है, शिव ज्ञान दाता, ज्ञान स्वरूप है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उनकी अर्धांगिनी शक्ति
जगदम्बा माता शक्ति के द्वारा ज्ञान का प्रागट्य होता है। खाली ज्ञान अंदर बैठ जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है ना। तो लेकिन जब परिमल के जीवन में कला आ जाए तो ट्रूली परिमल हो जाए, लाइक फ्रेग्रेंस, राइट? इट मींस ट्रूली, व्हाट वुड दिस गाय डू इफ ही जस्ट सैट हियर बाय हिमसेल्फ? Honestly, and this is all of everyone on this side, this is our story, all of us, right? we will just go to, all the external manifestation, all the creativity, all the energy, all the beauty, all the sharing of love comes from the left hand side of it, from the Shakti, because it needs power, it needs creativity, it needs brilliance, but it also needs it needs the potential. So there's the difference between the potential energy and the kinetic, right? The kinetic is the expression, potential is what we possess. So it needs both. केवल शक्ति, out of control है शक्ति, केवल शक्ति रह नहीं सकती शक्तिमान के बिना, है ना? ये कई सत्रों में हुआ. Source, the energetic, and the energy. Energy by itself cannot exist. That's just a myth. It's just a concept. If there is energy, there's got to be a source of energy. So there is the Shaktiman and there is the Shakti. And together they are inseparable. And you cannot say that now I'm going to take out my energy to speak and just sleep. Or like it goes wherever you go, whatever, all of your energies go with you also. They're inseparable. So it is. So what does that mean in the context of the Gita? And so in the 7th chapter, Gyan Vigyan Yoga, which is the one that we're doing in Gainesville, I think we either started on it or we might start next time. There are two shloks that Bhagwan Krishna, Vasudev Shri Krishna says, Bhumirapo analo vayu kham mano buddhirevacha ahankara iti yamme bhinna prakritirashtada. Some people thought there's no Gita, so there's probably not a Gita session today, but maybe. Apareye midam tvanyat viddhi prakriti me param jiva bhuta mahabaho. ऐसे दो ययेदम धारये जगत, दो श्लोक है. भूमि आपो अनलो, I'm counting and there is a connection with Navratri. भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच बुद्धि अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा, right? भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच बुद्धि अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा. तो भगवान कहते कि मेरी बहिरंगा, ये थोड़ा सा लास्ट टाइम हुआ था, है ना, Gainesville में, but I think hopefully you tolerate a refresher on that. So the 8 days, the first 8 days of Navratri are associated with that. भगवान कहते मेरी भी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की कही या हमारे मनुष्यों की, मेरी भी एक बहिरंगा प्रकृति है. प्रकृति अर्थात स्वभाव, my expression, my nature. There is an external nature to me and there is an internal nature to me, like with anyone and everything else. My external nature, my external prakriti manifests itself in 8 arms. Durga Mata के अष्टभुजा कहते हैं, 8 में शक्ति है, 8 में शस्त्र पहने. Any one of those can kill the demons, can get rid of the negativity, है ना? So अष्टधा जो प्रकृति की कई भगवान ने, जगदम्बा माता को कृष्ण की बहन समझी जाती है ना, दुर्गा माता, शास्त्रों में आता है कृष्ण ने अपनी बहन बताया उसे. So उसके जो 8 रूप, भूमि is the first form, the solidity of it. पृथ्वी जिसे कहते हैं, आप is the fluidity, water. Anal is agni, तेज जिसे कहते हैं, the heat energy. Vayu is the wind energy that fills the space. Kham is the empty space, the vacuum. I am going very fast, otherwise we would go normally slow and like sort of build upon each one of those. There's a scheme to this. और इसके बाद में ये 5 के बाद मन आता है. ये हम में सब कुछ पांचों है, हम सभी में है ना. We have some solidity, some fluidity, we have some air, some vayu in it, we have some empty space in it. In ourselves, and we also obviously have heat energy in ourselves also. It maintains at 98.5 constantly, है ना. So ये पांचों तो है ही, लेकिन मन भी है हमें, जो भगवद गीता में आता है. बुद्धि भी है, और फिर सबका बाप अहंकार भी है ना, कि I am all that. ये 5 मैं हूँ, 5 भूतों से बना शरीर जो मैं हूँ, अन्नमय कोश जिसे कहते हैं, वो मैं हूँ, या तो समझ लिया. अथवा तो उसके आगे वाला प्राणमय कोश, मनोमय कोश, उपनिषदों में आता है. दिस माइंड, व्हाटएवर आई थिंक आई एम, बुद्ध ने कहा कि यू आर दैट व्हाट यू थिंक, यू बिकम. भगवद गीता में भी आता है इनफैक्ट कि जिसके जैसे विचार है वैसे वो व्यक्ति बन जाए. हम अपने आप को अपना मन समझ लेते हैं. मेरे मन में
मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये करना चाहता हूँ, but that's the mind thinking. And then we think it with our brain, बुद्धि से. तो अपने आप को सीमित करके ऐसे ही समझ लो, या तो मैं शरीर हूँ, या तो मन हूँ, अथवा बुद्धि हूँ, और मैं हूँ जो भी, शरीर में हूँ, अथवा मन में हूँ, अथवा बुद्धि में हूँ, अथवा ये तीनों का, it's a flex model, it's a scalable. Sometimes I think of myself only as the body, sometimes I think of myself as the body and the mind, sometimes I think myself as the body, mind and the intellect, but regardless, I think of all of these as me. That's the ahankar. So नवमी के दिन, कल का जो नवमी का दिन आएगा, so भगवान ने कहा, again संक्षिप्त में, this is really going fast, I regret the pace of it. This is definitely counter to generally my preference and my style to slow down, not speed up, but just to get through the connection. ये 8 के पश्चात भगवान कहते दूसरे, उसके नेक्स्ट वाले श्लोक में, जीवभूत महाबाहो ययेदम धारये जगत. These 8 are my outward अपरा, है ना, outward परा प्रकृति है, दूर वाली, दूसरी, हम कहते हैं ना, पराया है, दूर वाला है, दूसरा है, बाहर का है. It is also associated with inferior. बाहर जो दूसरे वाले हैं और अपने वाले, हमारे innate sense होता है ना, हमारे वाले, अपना घर, अपना भाई, अपने बच्चे, अपनी गाड़ी, किसी की दूसरी गाड़ी को ठोका तो इतना बुरा नहीं लगता जितना अपनी गाड़ी को ठोका तो. How do I know? क्योंकि अभी mother came home with a ठोकी में गाड़ी से, इसलिए so ऐसा होता है. और भगवान भी कहते हैं अपना और पराया जो, that is real because it's sourced in him, it comes from him, it originates from him. So it is indomitable, it's unavoidable, it's inescapable. There is no reason to fight it. There is no need to fight it. The only thing we have to do is align with it. जब भगवान धर्म की बात करते हैं भगवद गीता में, है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, अथवा तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम. That dharma isn't Hindu or isn't religion or isn't a set of rules. It's just aligning with his method, aligning with the way things are, the way it is set up, the way system is made. You're just aligning with it, becoming one with it, flowing with it, right? There is control and just going with it. So ye 8 have been set in, so that is my outward facing, my inferior, the one that is jad prakriti ka bhagwan hai shlok mein. Jad is heavy. तो समझिए, jad also means unintelligent. Jad also means dependent. Jad also means that which cannot think of its own on its own. In other words, dumb. है ना, जैसे इसको मैंने छोड़ दिया जड़ तो ये गिर जाएगा अपने आप. जब तक इसको चेतन ने पकड़ के नहीं रखा है, until someone who knows to hold it does not hold it, as soon as I drop it, it will fall because it is जड़. तो ये कहा, ये अष्टधा प्रकृति में सब कुछ जड़ है. All of this जड़, इसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसको अपनी अकल नहीं है, इसको अपना अवेयरनेस नहीं है, इसको अपना कॉन्शियसनेस नहीं है. तो सोने को पता नहीं सोना है, तो उसका फिर सोने को उसका क्या अर्थ है ना. हीरे को अगर पता नहीं हीरा है तो, और हीरे का मे बी देयर इज नो सिग्निफिकेंस, वी गेव इट सिग्निफिकेंस. यार चमकता है, इसको कितने भी फैसेट्स बना सकते हैं, फिर भी छोटा हो सकता है. इट्स द हार्डेस्ट एंड दिस एंड दैट. वी सेड दिस, लेट्स थिंक ऑफ दिस एज प्रेशियस बिकॉज इट्स रेयर आल्सो. पर अदरवाइज हीरा डोंट केयर. प्रेशियस और नव तो पड़ा है, कब से पड़ा हुआ है ना, बिकॉज हीरा इज आल्सो जड़, सोना इज आल्सो जड़. So anything in the material universe, anything that can be touched or felt or seen or smelled, right, or all of those punch, they are jad because they are Bhagwan's, God's outward manifest. They are not chaitan by themselves. There is no chaitanya in them. There is no life in them. The self-propelling life नहीं है. उसमें जब चेतन आता है ना. So then if you think about it, everything that can be touched or seen or felt, anything that is outside of us, no matter how grand, no matter how glorious, how shining, how beautiful, is jad, and in God's view worthless. And so the house, the big house, and the gold jewelry and the ornaments and the beautiful body and the black hair and the makeup and all, like entire thing, and the lovely dresses and all of it, and the degree and the name and the fame and the car, all of it is jad. According to God, you don't have to take my word for it. But if भगवान कृष्ण का नाम सुना है तो वो कहते हैं गीता में कि ये सारा जड़, इसकी इतनी कीमत नहीं है relative to, compared to what? The one that's inside. Because everything that is outside is held together. Jiva bhuta mahabaho yayedam dharayate jagat. Mahabaho is one of Arjun's sort of designations, mighty armed.
पावरफुल गाय, बिग गाय, उसे कहते हैं जीव भूत। ये जीव जो है अंदर में, भूत के अंदर जो जीव है, अगर हम जीव को पहचानते नहीं तो हम मात्र भूत है, भूतड़ा है ना। लेकिन वो हर भूतड़े के अंदर में जीव है, जीवन है। द डॉक्टर्स वुड नो, राइट। जब वो निकल गया तो सो भेज देते हैं ना, जीव निकल गया तो कितने देर तक रख पाते, नहीं रख पाते किसी को, नोबडी वांट्स टू, क्योंकि वो कुछ अब काम कर नहीं रहा। ऐसा कैसा मटेरियल, उसके वैसे के वैसे काले बाल है, ऐसी हड्डी है, उतना सब का सब है, उसके पोजेशन भी सब है, बैंक अकाउंट पे भी नाम है, गाड़ी भी सब है, लेकिन ये क्या हो गया कि उसको फेंक दिया, जला दिया, डुबा दिया, कि ऐसा कैसे हो गया? थिंक अबाउट इट, वी ऑल नो अबाउट इट, क्योंकि जो चलाने वाला था वो चला गया, चेतन नहीं है। So this suggestion here, the hint here from God is that we ought to pay attention to that which is inside, that which is within. And that which is within, God says, is my original nature, my prakriti, God's nature. है ना? So, अपरये मिदम त्वन्यात्, इससे तो कुछ अलग ही है। अपरा मतलब नजदीक वाली, अंदर वाली, परा मतलब दूसरी वाली, superior kind, मिदम त्वन्यात्, वो तो the way this grammar works in Sanskrit, the way it is set up, it is he's saying, my dear, endearingly saying, जैसे हम हिंदी में कहते हैं यार तेरे को क्या बता, लोग listen, I'll let you in on a secret, seriously, this this the one that's inside. अगर बोल भाषा में, बच्चों की भाषा में कहते do it, let me I tell you, the real deal is inside. ऐसे वो दोनों भाई दोस्त है ना, वो तो the way the grammar works in Sanskrit, the way it has been said, अपरये इदम त्वन्यात्, यार तेरे को बोलता हूँ मैं ऐसे कि ये तो जो अलग ही है, ऐसा जो हिंदी में क्या वैसे संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन होता है, विद्धि में पराम, विद्धि इज नो दैट टू बी, आई एम शेयरिंग दिस सीक्रेट विद यू। कृष्ण इज सेइंग टू अर्जुन दैट जीव भूत महाबाहो येदम धारयेत जगत, सारे भूतों में जो जीव है, जीवन है, येदम जिसने धारण करके रखा, उठा के रखा, पहन के रखा है। जैसे मैंने ये कुर्ता पहन के आया, तो मैं तो ग्रीन कलर का नहीं हूँ, मैं तो ये झोलमा नहीं हूँ, मैंने इसको पहना है, इसलिए ये महाराज यहाँ पे आ सके। इसको अगर मैं दूसरे किसी को पहनता तो ये उधर ही हैंगर पे लटका होता था, उधर ही क्लोजेट में। आई डिसाइडेड टू वेयर दिस एंड ब्रिंग इट हियर टू द फेस्टिवल, राइट, देयरफॉर दिस गाय इज हियर। ऐसे ही जीव ने इन शरीरों को धारण किया, हमें धारण किया, हम जो वास्तविक जीव है इसको धारण किया। इसकी इतनी कीमत नहीं है, इन फैक्ट भगवान कहते हैं कुछ भी कीमत नहीं है, इसकी वैल्यू ही नहीं, मूल्य ही नहीं, इसकी अपनी अकल ही नहीं है, तो एकदम राइट वर्थलेस है। सारी कीमत, सारी वैल्यू, सब कुछ जो अंदर में है, जो हम है, उसके साथ, उससे जुड़ी हुई है। वो मेरे से जुड़े, दैट इज एज इफ आई एम इन देम, एज सो द वन दैट आर इनसाइड आवर रियल सेल्फ, आवर रियल नेचर is one with God, is the same as God, like the water in every wave. The water in every wave is the same one with the ocean. It is the same ocean, same water that is forming different waves, the big and the small, the long and the short, the ones that go for a long time, or those who crash on crash into 1,000 pieces, or even the 40 feet tsunamis wave. No, none of them is bigger or smaller or superior or inferior than the other, because the water is the same. And like that here also, or anywhere in the cosmos, there is really, actually there is no difference in the substance, because there is only one. And that one, जैसे सारा का सारा पानी समुद्र के साथ एक है, समुद्र ही है, ऐसे ही सारी जीवात्माएं भगवान के साथ जुड़ी हुई भगवान ही है ना। जो अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत का जो अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी आती है, this is what it suggests. This, by the way, that comes from Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, Hare Krishna वाले ISKCON के जो प्रमुख गुरु थे ना, उनसे जो निकली हुई थी। So, what does that mean then? What about Navratri? So, what is supposed to happen is, from the first day of the Navratri, we're supposed to meditate on it कि मैं भूमि नहीं हूँ, मैं आप नहीं हूँ, ना मैं अनल नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, नहीं 5 हो गए। फिर छठे दिन, षष्ठी के दिन मैं मन भी नहीं हूँ, सप्तमी के दिन मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, अष्टमी के दिन अभी मैं अहंकार भी नहीं हूँ। मैं जो मैं जो कर रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ, वो मैं नहीं हुआ। नाउ वी आर एट द कस्प, संध्या की वेला है, वी आर एंटरिंग नवमी जैसे, और इसके बाद जो नाउ स्टार्टिंग टू सी द लाइट दैट परहैप्स आई एम, भगवान की जो अपरा प्रकृति का जीव की जो बात करें, आई एम दैट,
है ना. सो आई वुड एनकरेज, अभी 8 दिन निकल गए तो निकल गए, कोई बात नहीं, वैसे भी इसकी तो कीमत थी नहीं एनीवे, है ना. सो व्हाट डज इट मैटर वेदर वी मेडिटेटेड ऑन इट और नॉट, बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कट इट एट द रूट एंड से एनीवे इट्स गॉन, राइट. उखाड़ के फेंकना ही है तो फिर ये पत्ता तोड़ा, वो पत्ता तोड़ा, ये फूल तोड़ा, ये नाटक क्यों करे, सीधा उखाड़ के फेंक दे सारी वीड को, है ना. तो नो लॉस. अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गीता देयर इज नेवर अ प्लेस फॉर रिग्रेट. There is never a place for negativity. There is always a view. There is always a point of view to really look at the brighter, the positive side. But tomorrow, I would encourage, though, maybe this evening when you go home. But if you've eaten too much and it's hard to meditate, maybe tomorrow morning. And but then Monday morning has. So I don't know how that will work. But figure it out. Maybe tomorrow evening. That. Perhaps I am my true nature, my real nature, according to BhagwadGita. Again, this is the 7th chapter. Read the first 20-25% of the 7th chapter, Gyan Vigyan Yoga, and you'll come across this. This may be like the 5th and 6th slok, possibly. So, then what does it mean कि मैं भगवान की अंतरंगा शक्ति हूँ, मैं भगवान की बहिरंगा शक्ति नहीं हूँ. तो मुझे फिर व्हाट शुड आई डू. ज़्यादा आँच से लेकर के ज़्यादा इसमें नहीं चिपकना है, ज़्यादा इसमें नहीं भागना है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है, इसको अक्यूमुलेट नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं जमा करना है. अभी जो वो कैलाश पर्वत चढ़ के आई बहन, किलिमंजारो जाके आया, तो बात सारी कथा ये थी कि कम से कम बैगेज छोड़ते जाओ. अगर राइट जितना राइट. Yeah, I did a 12-day New Mexico. How much baggage did you carry? Just my backpack. Yeah, and then ultimately, right, the more you carry, the harder it is. Yes. And so it is with Somebody life. asked me, why didn't you take your phone? I'm like, it has weight. Yeah. I don't want it. Ultimately, to reach the peak, to reach the highest point, you must travel the lightest possible. And so what are we doing here? Now, we want to reach the peak, the sort of the deepest, or the depth, the innermost, the highest, the best. और ये सारा ये जो इकट्ठा हो रहा है नवरात्रि के निमित्त, गरबा के निमित्त, लड्डू पेड़े के निमित्त, जो भी सब तो बार बार ठीक है, मजा है, आनंद है, भगवान कृष्ण के लीला में तो सभी है ना, सबके लिए स्थान है, लेकिन कहीं न कहीं जागृति भी हो, है ना. ज़्यादा डिफॉल्ट ऐसा है ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं बीच बीच में जाके इसको थोड़ा सा सीधा भी कर दे, थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़ा टाइट कर दे जाए कि यार ये सब ठीक है नाटक के लिए, बट आई एम नॉट फॉरगेटिंग द ट्रूथ बिहाइंड दैट. Don't leave that. Just another example I give is हमारे घरों में गैस की फायरप्लेस होती है ना, गैस फायरप्लेसेस these days. तो गर्मी के दिनों में 6-8 महीने तो फायरप्लेस नहीं चलाते, लेकिन उसके पीछे नीचे झुक के देखे तो पायलट लैम्प इज ऑलवेज बर्निंग. यू नीड दैट पायलट लैम्प बर्निंग, ताकि जो एक स्विच से खटाक से पूरा शुरू हो जाए, है ना. इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. ऐसे ही पायलट लैम्प बुझ न जाए कि ये कितना भी कुछ भी चल रहा, लेकिन जब समय हो तब से फटाक से पायलट लैम्प को ऑन करके realizing that, wait a minute, I am not the external. All I need, everything I need. In fact, the best mall is inside, within me. I must go visit what's within and identify my connection with God. You will, 100%, 1,000%, guaranteed, without a doubt, no question, you will directly identify your connection with God. In the sense that you are that, right? ऐसा जो शास्त्रों में कहा तत्वमसि, जो सुना महावाक्य उपनिषदों में आया है ना. मैंने एक बार कहा था, ये एक वाक्य आता है उपनिषद में 9 बार दोहराया गया है. 9 times it has been said tat tvam asi, अलग अलग उपनिषद. This is the only thing that has been repeated the most. And as I ask mothers, like, what do you repeat to your kids the most? That which you think is the most important. Don't forget this. Or your husband's been going on a grocery trip, right? Whatever. So it has been suggested that you are that alone only. So again, maybe we'll start wrapping up so that we can get towards the rest of the program. But bhumi apo analo vayu kham mano buddhi revacha ahankar iti yamme bhinna prakriti rasha. भिन्न है, दूसरी अलग वाली अपनी नहीं है ना. तो इतना नहीं चिपके, देखिए उसको, सह ले, रहने दे अपने साथ, वैभव को ना अपने साथ रहने दे, कोई वाना नहीं उसमें, लेकिन वो परा है इतना पक्का ध्यान में रखे. अपर ये मिदम त्वन्यात्, भैया ये तो दूसरी ही है, जो अपरा है, जो अपनी वाली अंदर वाली है. विद्धि में पराम, इसको समझ ले अच्छी तरह से. जो जीव भूत महाबाहो येदम धारित, ये सब the one that belong, all of this belongs to, right?
is the one that you are. So I would again remind and encourage everyone, so starting tomorrow. And then Dashara, by the way, the 10th day I didn't finish, the Vijayadashmi कहते हैं ना दशहरा को, सचमुच में विजय प्राप्त हुआ जब भगवान के साथ अपना तादाद में, ये 8 से परे होकर 9वें दिन, कल के दिन हम जीवात्मा हैं, हम जीव है, धारण करने वाले इसको पहचान ले। और 10वें दिन सच्ची विजय किसकी हो? जो भगवान के साथ अपनी आइडेंटिटी हो गई, भगवान को प्रामुख्य दे, भगवान को आइडेंटिफाई करे, भगवान को सामने रखे। मैं और तुम एक हो, ये तो ठीक है ना भगवान? मैं अभी 9वें दिन समझ में गया कि मुझ में और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तुम ही इस रूप में हो, ये तो ठीक है। लेकिन ये न कहीं फिर से अहंकार सूक्ष्म में घुस जाए कि मैं ही भगवान हूं करके, है ना? मैं को तो छोड़ना है, मैं और तुम एक हो, लेकिन मैं हूं ही नहीं, तुम हो, right? At the wave identifying with the ocean, saying that now I realize that all the waves are you, ocean. I do not exist. You and I are not different. Wave saying to the ocean, you and I are the same, right? In the form of the water. I do not exist. You alone exist. So we don't want to get into this that, oh, wave thinks I am the ocean. तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना? उल्टी यात्रा शुरू हो जाएगी. अथवा the last example I will give that you've heard 100 times, if you're dreaming, स्वप्न में जो स्वप्न पात्र आते हैं, है ना? When we dream and we have like 100 different characters doing different things, one of those dream characters in the middle of the dream waking up, that wait a minute, I do not exist. Dream characters don't exist, right? स्वप्न में स्वप्न के पात्र वास्तविक में नहीं होते ना. स्वप्न के पात्र जो उस समय 2 से 3 अगर सपना चल रहा हो तो स्वप्न के पात्र स्वप्न वास्तविक में कहाँ होते हैं? थोड़े समय के लिए आभास होता है, सच्चाई लगती है, लेकिन सच्चाई नहीं होती. That seems very real and therefore it is real, but there is a higher reality जिसे माया कहते हैं ना, मिथ्यत्व कहते हैं. है भी और नहीं भी, मिथ्या कहा है ना संसार को. तो इसकी शंकराचार्य ने भाषा करी जो है भी और नहीं भी. इसका क्या मतलब? है भी और नहीं भी, वास्तविक में नहीं, लेकिन है जैसा प्रतीत होता है. In reality it does not exist, it feels so real. है ना? Wave थोड़े समय के लिए लगती है. There is no such thing as a wave. A wave by itself could not run on the street. It can only exist so long as it is connected with its source. Sunshine does not exist of itself. है ना? It is connected with the sun. So स्वप्न के पात्र, the dream characters cannot exist by themselves. They are very much connected with the dreamer. They are born in the dreamer, they exist in the dreamer, and they go back in the dreamer. Completely at all times, it is the dreamer alone. Never mind what the form and the shape and the name it is. And so the dream, one of those dream characters, जागृत हो जाए, जागृत महापुरुष कहते हैं हम लोग, जाग जाए, awakened, enlightened. पुरुष कहे कि wait a minute, I really do not exist. There's no such thing as I or me. It is him alone. It is her alone. However you want to worship the force, the power, you know, that has momentarily taken this form. And look at me, fool, that I completely forgot. मेरा अहंकार इतना बढ़ गया कि मैंने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को इंजीनियर समझ लिया, डॉक्टर समझ लिया, सब जो भी बाप समझ लिया, और अपना वैभव बढ़ाने लग गया. और इतने इसमें कितना बड़ा गधा बन गया कि जो मेरा सारा वैभव मेरा था. Everything belonged to me. If I am connected with God, in the connection with God, there is nothing separate from me. I do not have to worry about accumulating. I don't have to stress out about what about tomorrow. What about tomorrow? For billions of years, before and after, I will still exist in the form. So I don't have to worry about any of this. You know? So इस दशहरे के दिन, दशहरा इन सबको हरा के, there are various interpretations की 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 को जिसने हराया, जिस पर कांकर कर लिया, ये वो. There is also राम जी की कथा है, विजयादशमी. But the Gita's connection with this is that these are 8. We've traveled so far now today. Very auspicious moment, very beautiful day that we heard this on the cusp, on the 8th and the 9th day, that tomorrow I'm going to recognize and at least commit, at least think about, at least hold each other's hands, like husband, wife, at least encourage each other, or children, right? That remind each other that don't get too wrapped up in it, don't get too carried away, that don't get too excited about it, don't get too depressed about it, don't get too attached to anything, because all of this isn't us or है ना, जिस हम जहाँ से आए हुए हैं. So tomorrow we will all remind ourselves that we are actually the inner अंतर यात्रा की जीव रूप से. And on the 10th day will completely dissolve that even that doesn't, that God alone exists. भगवान ही भगवान, तू ही तू प्रभु, मैं नहीं, है ना.
So इस प्रकार से आगे जाती है और फिर then 7th chapter takes it beyond that. So I thought maybe we will pause, stop here. Maybe we'll do 5 more minutes of dhyan, just sort of capturing all that, and we'll stop. Does that work? Yeah. Okay. So फिर से शांत हो जाए, जहाँ तक संभव हो आंखें बंद करें, क्योंकि हमें बाहर की यात्रा को थोड़ा विराम देकर अंदर की यात्रा करनी है. So turning my sight inward, momentarily cutting off the outward, and examining the treasure that is within, the opulence that's inside of me, how I am able to hold this body, how I am able to breathe, consume, process, produce, generate, carry. How do I do this? What miracle am I right here, right now? Oh dear God, why have I been running all my life outside, here and there, looking for chamatkar, siddhi, miracles? किसी की कृपा हो जाए, किसी का हाथ लग जाए, किसी की चरण धूलि मिल जाए, किसी का प्रसाद मिल जाए. आज के दिन जगदम्बा माता के निमित्त भगवान शिव जी के वचन याद करें. नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, देवी तस्मात् ध्यानम समाचरेत्. हे सुमूर्ति, शिव पुराण में शिव जी कहते हैं पार्वती माँ से, ध्यान के समान कोई दान नहीं दे सकता, ध्यान के समान कोई तीर्थ यात्रा नहीं, ध्यान के समान तेज पुंज कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान पवित्र करने वाला कोई तीर्थ नहीं. इसलिए ध्यान देना, पे अटेंशन, ध्यान करना, क्योंकि जैसे ध्यान द्वारा हम अंदर की यात्रा करते जाए तो एक से एक खजाना हमें स्वयं की प्राप्ति हो, हमारे सत्य चित आनंद रूप की पहचान हो, हमारे सत्यत्व का अनुभव हो. That I ever exist, I never perish. नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका. न मुझे कोई काट सकता, न जला सकता. ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न में किसी स्वप्न पात्र को वास्तव में कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह स्वप्न पात्र स्वप्न दृष्टा से एक मिला है. स्वप्न का कोई शास्त्र, स्वप्न का कोई शत्रु, स्वप्न का कोई संकट इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ऐसे ही मैं भी जीवात्मा सत्य स्वरूप हूँ, अपने परमात्मा से एक हूँ. Just like the dream character eternally connected in and with the dreamer, I, the Jivatma, am ever associated, one with my Paramatma. The beautiful, lovely dreamer, my Bhagwan Vasudev Sri Krishna. The lover of all, the beloved of all, love himself, the Lord of love. वंदे कृष्णम जगत गुरु. इस प्रकार अपने सत्यत्व पर ध्यान करे, निश्चिंत हो जाए. क्या चिंता है? What worries? शरीर का होगा तो क्या होगा? What do I have to do with the body?
Why would a wave that has recognized its water form worry about the wave form? Here today, gone tomorrow. One wave crashing into 1,000 many other waves, ever living in the form of different waves, same water. ऐसे ही मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, I'm consciousness itself, I'm awareness itself, मैं बोध स्वरूप हूँ. I am, therefore all exists. जब चेतना शरीर से निकल जाए, if I am dead, nothing exists, nothing will exist, nothing will mean anything if I do not exist. If I give everything its meaning, things don't have meanings, objects are not conscious, I make them conscious, I bring meaning. Just as the sunshine brings to light everything that it falls on, every object is visible. If the light falls on it, in the dark, the object might as well not exist. ऐसे मैं चेतन हूँ, समझ सकती हूँ, और मैं आनंद स्वरूप हूँ. I do not depend on someone else's praise. I need not anyone else tell me how good I am. My worth is not counted by how many likes, thumbs up I have, how many connections I have. I am the connection. I am the connector. I am in all my connections. What do I care about dead thumbs up or not? इस प्रकार अपने ईश्वर स्वभाव को जागृत करें. Remembering my divine opulence, ईश्वरी वैभव को याद करें. तो फिर अर्जुन की नाई हम भी कह उठे विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतम् स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव. My dear Lord, I now remember my original nature, मेरी सहज स्थिति. The fact that I am sahaj, I am always with the aja, with the unborn. I am ever with you, my Lord. Why would I worry? I had become forgetful momentarily. Pardon me, forgive me. Now on, this Vijayadashmi, 50 दशहरे हो गए, 60 दशहरे हो गए, 40 दशहरे हो गए. 40 बार, 50 बार, 60 बार सूर्य भगवान के अराउंड हमने परिक्रमा करी. कितना समय बीत गया. अब एक तुक्का ऐसा लग जाए कि मरो मरो सब कहे, मरना जाने न कोय. एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए. एक झटका ऐसा लग जाए भगवान नाम का कि अपने अमरत्व की पहचान हो जाए. बिंदास हो जाए, अपने शहंशाह स्वरूप को पहचाने. सारी चाह मिटा दे, कुछ नहीं इकट्ठा करना, कुछ नहीं जमा करना. चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह. चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह. जिनको कछु न चाहिए वो शान के शाह. कुछ नहीं चाहिए भगवान. उस देने वाले दाता के साथ हमारा एकत्र हो जाए तो हम देने वाले हो जाए, लेने वाले नहीं, चाहने वाले नहीं. शाहों के शाह, शहंशाह हो जाए.
तो फिर एक बार सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तुभ्यं नमो नमः। जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, जय शिव शंभो, जय श्री कृष्ण। Thank you for indulging